श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अध षोडशोऽध्यायः 19 श्लोकम्। अयं तु साक्षात् भगवान् स्त्रियदीशकः गूढस्थ आत्मा कलयावतीर्णक यस्मिन्न विद्यारचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम् अयं भुवो मण्डलमोदयात्रे गोप्तैर्कवीरो नरदेवनाथक आस्ताय चैत्रं द्रदमात्तचाप वर्यस्य ते दक्षिणतो यदार्कक अस्मै नृपाला किल तत्र बलिं करिष्यन्ति सलोकबालाः मंस्यन्त येषां श्रिय आदिराजं चक्रायुधं तत्यश उद्धरन्त्यक अयं महीं कां दुदुकेतिराज प्रजापतिर्वृद्धिकरप्रजानां यो लीलयात्रीन् स्वशरासकूट्या बिन्दन् समां कामकरोद्यतेन्द्रक विष्पूजयन्नाजकवं तनु स्वयं यदा च रक्षमाम विशक्यमाजौ तथा निलल्युर्दिशि दिश्यधन् सन्दो लाङ्गूलमुद्यम्य यदा मृगेन्द्रक येषो अश्वमेधान् सदमाजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र अहारशीत्यस्य हयं पुरन्दर चदक्रदुच्चरमे वर्धमाने येष स्वसत्मो भवने समेत्य सनत्कुमारं भगमण्डमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तज्ज ज्ञानं यदो ब्रह्म परं विदन्ति तत्र किरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमक शोच्य आत्मास्त्रिता गाता भृतु पराक्रमक दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध्य चक्रक स्वतेजसोद्भाटितलोकशल्यक शुरासुरेन्द्रैरुपगीयमान महानुभावो भविता बधिर्भुवक। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ भगराज की जय।